students to standard 10th. Now here maths or science queries. This is a new session I have started. Alright, queries, and this is session 1. Session 1. Few children have sent me their queries, questions on WhatsApp. I am going to solve them. Correct? Prakriti from 10th standard has sent few questions from chemistry. Let us see the answers. First, what is the ratio of number of moles of reactants and products in the equation? Okay, what is the equation? H2S in gaseous form, that is hydrogen sulfide, reacts with sulfur dioxide, also in gaseous form, to give sulfur in solid form and water in liquid form. Alright, okay. Children, what is the question here? Number of moles. यहाँ जो भी नंबर आता है फॉर्मूला के आगे, that is mole. 1 mole of H2S combined with 1 mole of sulfur dioxide to produce 1 mole of sulfur plus 1 mole of water. But this is not a balanced chemical equation. So first you will have to balance the equation, children. Okay. किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर को पहले? यस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में आप बैलेंस कीजिए. व्हाट इज द नंबर ऑफ सल्फर एटम हियर? 1. अगेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 1. So 1 and 1 2, but on right hand side only 1. So you may write 2 here. So number of sulfur atoms are balanced. But okay, now what is the number of ऑक्सीजन? हाइड्रोजन तो 2 है और 2 है, बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है यहां और यहां एक ही है. सो यू हैव टू पुट 2 हियर. करेक्ट चिल्ड्रन? ऑलराइट. नाउ 2 2s are 4 हाइड्रोजन और यहां तो 2 ही है, सो आई हैव टू पुट 2 हियर. करेक्ट. नाउ by putting 2 hydrogens are balanced, but sulfur became 2 and 1 3. So number of sulfur atoms now on left hand side have become 3. So you have to make 3 on right hand side. That's it. All right. Now product 1 and a product 2. Product 1, sorry, not product but reactant 1 and reactant 2. Reactant 1 है हाइड्रोजन सल्फाइड. कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे हैं? 2. और रिएक्टेंट 2 है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1. सो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज 3. नाउ प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट है, सो आई एम राइटिंग प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2. व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर फर्स्ट प्रोडक्ट 3 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 2. सो आप प्लस कीजिए 5. सो टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर 3 and the total moles of products are 5. So the ratio which is asked is 3:5. I hope that is clear. Okay. Next, nickel 2. That means Ni plus 2 wala. Nickel 2, actually nickel nitrate is prepared by heating nickel metal. आप निकल मेटल को हीट कर रहे हैं, निकल in solid state with liquid dinitrogen tetroxide. चिल्ड्रन किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? डाइनाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन का सिंबल N और डाइनाइट्रोजन मींस 2 और टेट्रोक्साइड, ऑक्साइड इज O और टेट्रा इज 4 and this is in liquid state. Correct? And we are heating this nickel metal with dinitrogen tetroxide is heated and we get nickel nitrate. Children, nickel nitrate Ni plus 2 बताया है और नाइट्रेट NO3 minus 1. चिल्ड्रन लर्न कीजिए, निकल का नहीं है लेकिन नाइट्रेट का है. आर यू गेटिंग मी? सो दिस विल गिव यू Ni1 और Ni1 और NO3 twice. All right? Okay. In addition to nitrate, जो ये मिला, gaseous nitrogen monoxide is also formed. So plus nitrogen and monoxide means 1. Mono means 1. Nitrogen monoxide is also formed. All right. Now we have to balance the equation. Well, number of
नाइट्रोजन N2 और यहां भी N2 है, N2 और 1 यहां 3 है, करेक्ट। नाइट्रोजन N2 और 1 3, सो व्हाट विल हैव टू डू, यहां 2 लिखेंगे तो इवन नंबर होगा, N2 2 and 4 और इजीली यू कैन राइट 4, सो 2 2s are 4, करेक्ट। इन दैट प्रोसेस ऑक्सीजन बिकेम 2 4s are 8, तो यहां 2O और 3 2s are 6, 6 plus 2 8 हो गया, और निकल तो 1 ही है और यहां भी 1 है, सो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सो राइट बैलेंस इक्वेशन, बैलेंसिंग भी हो गया। चलिए नंबर 3, write balanced chemical equation with state symbols for the following reaction. Solution of barium chloride. Barium is Ba plus 2, chloride is Cl minus 1. आप याद करो चिल्ड्रन, so you will have Ba1 or Cl2. This is barium chloride. Reacts with solution, so ये aqueous होगा. Reacts with sodium sulfate. Sodium Na plus 1 और सल्फेट SO4 minus 2, सो 2 यहां ज्वाइन होगा, 1 वहां लिखने की जरूरत नहीं है, Na2SO4, ये भी सॉल्यूशन, सो एक्वियस सोडियम सल्फेट, ऑलराइट, प्रोड्यूसेस, सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड ये रहा, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, इसका भी सॉल्यूशन इन वाटर ये रहा. To give insoluble barium sulfate solution, children, insoluble barium sulfate solution of sodium chloride. So आपको दो चीज मिलती है, बेरियम सल्फेट, बेरियम Ba plus 2, सल्फेट SO4 minus 2, so सीधा ज्वाइन करो, plus 2 minus 2 है, so you get first product BaSO4, alright, ये insoluble है, so this is solid, alright. And next you get is sodium chloride. Sodium is Na plus 1, chloride is Cl minus 1. सीधा join plus 1 minus 1, NaCl. Children, ये soluble है, ये aqueous है, ये insoluble substance, ये sodium chloride solution में आपको मिलेगा. Is that clear? So आपको बैलेंस तो करना ही होगा. चलिए, we start with chlorine. Chlorine 2, यहां chlorine 1 है, 2 कर दो, तो सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, बैलेंस, सल्फर 1, बेरियम 1, ऑक्सीजन 4. So simply by putting 2 here, the equation is balanced. Okay, now number 4, balance the equation after writing them as molecular equation. Triled tetraoxide, triled, lead is Pb and tri is 3, oxide is O and tetra is 4. Okay, on decomposing, yes, decompose हो रहा है, lead monoxide, lead is Pb, mono means one oxide, plus oxygen, that is O2, it will be in gaseous form. All right, चलिए, now see, yes, now you have to balance it. lead 3 है, यहां 3 कर दीजिए, तो ऑक्सीजन 3 हो गया और 2 5 हो गया. ऑलराइट, आपको क्या ऑक्सीजन पहले बैलेंस करना होगा. चिल्ड्रन, दिस इज इंटरेस्टिंग. आप ऐसे कर सकते हो, यहां 4 है ना और यहां 3 है, करेक्ट, तो यहां आप 2 लिख सकते हो. सो क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन लीड यहां 3 है और यहां बोलिए 2 है, सो दैट इज नॉट बैलेंस. सो व्हाट इज एलसीएम ऑफ दैट, 6. आप एक काम कर सकते हो चिल्ड्रन, व्हाट टू डू, चलो वो मेथड से करेंगे हम. लीड, फिर ऑक्सीजन, सिर्फ 2 है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड हम कितने मॉलिक्यूल्स ले ले, यहां A, यहां B ले ले और यहां C. लेफ्ट हैंड साइड पे लीड कितना है, 3A, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 4A. राइट हैंड साइड पे लीड कितना है, B, ऑलराइट, और ऑक्सीजन कितना है, 2C. यहां भी ऑक्सीजन है प्लस B, करेक्ट. ओके, नाउ चिल्ड्रन, left hand side should be equal to right hand side.
So from here you are getting value of B in terms of A. So what you got? Second equation, 4A is equal to 2C plus B. But in place of B, I am writing 3A. So 4A minus 3A is equal to 2C. So A is equal to 2C. आपको दो रिलेशनशिप मिले, राइट? 2C. यहाँ 3A है, so I am multiplying 3 on both sides. So 3A is equal to 2C into 3. So that makes 3A is equal to 6C. So अब transitivity develops. So 3A is equal to B, and that 3A is also equal to 6C. Now 3 और 6 का LCM है 6. So divide each one by 6. 3 1s are 3 2s are 6 and 6 cancels. So you got A upon 2 is equal to B upon 6 is B upon 6 is equal to C upon 1. So your A is 2. So this is 2. B is 6. This is 6. And C is 1. This is 1, which you may not write. So now it is balanced chemical equation. 2 3s are 6. 6 PB. 6 and 2 8. 4 2s are 8. So now it is a balanced chemical equation. Clear? Fine. Proceeding further. Let's see. Action of heat on blue vitriol. Blue vitriol is copper sulfate. Blue vitriol is copper sulfate and it is blue in color with 5 molecules of water. Alright? Okay. So action of heat, when you heat this, it is a physical change as well as a chemical change. Justify. Children, this copper sulfate dot 5H2O, okay, pentahydrated copper sulfate, it is blue in color. When you heat it up to 800 degrees Celsius temperature, okay, this water molecules are gone. Copper sulfate and 5H2O are removed. Now this is white in color. Alright, this is white in color. So when you heat, the color changed. But when you add water, copper sulfate जो आपको मिला, okay, when you drop water there, again you get copper sulfate dot 5H2. So again blue color is obtained. From white, again blue color is obtained. That's why we say, okay, it's a physical change. Heating, we have heated here. We have heated here. So blue turns into white, and on dropping water, again white turns into blue. So this is simply a physical change. But when you heat it at high temperature, copper sulfate dot 5H2O, when you heat it at high temperature, of course, you are going to get copper sulfate, and that 5 molecules of water are removed. So decomposition takes place, children. Decomposition of copper sulfate. Composition takes place. Right? Okay. Now this on further heating. आप heating चालू रखो, पानी तो वेपर बन के उड़ जाएगा. If you continue heating, what you are getting? Copper oxide plus sulfur dioxide. So see, new products are obtained. Here new products are obtained. Alright. So it's a chemical reaction. So heating at high temperature, it's a chemical reaction because decomposition takes place, and heating in a range, only the color changes, and when water is dropped, again the color is regained, blue color is regained. So it's a physical change. Alright. The next one. Name the organic compound which can be prepared by fermentation of sugar and is also a constituent of beer. Children, आप सुगर लीजिए, उसका फर्मेंटेशन कीजिए. सुगर इंडस्ट्रीज में इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं. चिल्ड्रन, जो सुगर इंडस्ट्रीज में वेस्ट जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाउ इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल. दिस इथेनॉल इज एज गुड एज फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल. पेट्रोल डीजल की तरह फ्यूल के हिसाब से यूज कर सकते हैं. ऑलराइट. So fermentation of sugar gives ethanol, and this ethanol is also used in preparation of beer. So the answer is ethanol. Okay. Now there is one question from Pratham. Alright. It's from maths.
If the area of quadrant of a circle is 22 centimeters square, find its perimeter. Children, area is given. Kiska area? Quadrant ka. So I'll draw a figure. This is circle और 4 भाग में डिवाइड कीजिए. So this arc, this radius and this radius, this is quadrant, that is quadrant of the circle. So area of quadrant is given to be 22 centimeters square. Now what is the formula to find area of quadrant? ये 4 इक्वल भाग में हो गया ना. So area of quadrant is 1/4 the area of circle, and that is equal to 22. Now circle की formula pi r square, that is 22. So 1/4 into pi 22 upon 7 into r square, that is equal to 22. 22 cancels. So r square is equal to 4 or 7. वो बाजू गया. So r square is 28. So if you look at root, if you want to find radius, then that is 2 root 7. 28 का देख लीजिए. 2 14s are 2 7s are 7 1s are. So here is the pair. 2 root 7. So you got radius. Now you are supposed to find the perimeter. Perimeter is equal to ये है part radius, ये है part radius और ये है arc L. Alright. So r plus L. R is already available. 2 root 7 plus 2 root 7 plus length of the arc. Children, पूरा circumference का 1/4. ये भी 4 भाग में होगा ना. ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. पूरा सर्कल का 1/4. 1/4 2 pi r. So this is like terms 4 root 7 plus 2 1s are 2 2s are, so half. पाई की वैल्यू आप 22 अपॉन 7 डाल सकते हैं और r की वैल्यू 2 रूट 7 है. 2 2 कैंसल. सो दिस इज 4 रूट 7 अपॉन 1 प्लस 22 रूट 7 अपॉन 7. गो फॉर द एलसीएम. 7 7s are 1s are 7 4s are 28 root 7 plus 22 root 7. 28, these are like terms. 28 plus 22 50 root 7 upon 7. So the answer is 50 root 7 upon 7. This is the perimeter. Alright. This is the correct answer, children. I hope your queries are solved. Every student have to see this, watch this, prepare for the board exam nicely. That's all for this query session. Alright. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day, children.